Hello everyone, welcome to Career Launcher. My name is Saurabhranjan and I teach quants and LRDI at Career Launcher Ranchi Center. Career Launcher Ranchi offers a wide range of courses to help students to prepare for exams like CAT, ZAT, SNAP, NMAT, CMAT, and all other MBA entrance exams. Apart from that, it also offers programs for all law and IP-MAT exams like CLAT, ALET, IP-MAT Indore, IP-MAT Rohtak, ZipMAT, as well as CUAT. Guys, any information that you want related to any of these courses or any new batch starting, visit to our centers that is in Ranchi as well as Jamshedpur, or call on these numbers and get your queries done. So, guys, this is the fourth part of our new series, which is LRDI, Basic to the Advanced Level for CAT 2025 aspirants. And I hope that these lectures are helping you in your preparation. Okay, so today we are going to solve a set which will be a set on matrix arrangement, and a bit of numbers. So usage of numbers. So let's quickly look at the set. So the set reads as five technologically advanced countries like US, UK, United States, United Kingdom, Japan, Italy, and Germany were invited to participate in a prestigious summit focused on resolving futuristic challenges. So there are some futuristic challenges जिनको resolve करने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई है. Now, the summit features four innovation domains, which is cybernetics, bioware safety, oceanic sustainability, and radiant technologies. Right now, so we have now till now we got two variables that needs to be arranged. That is the name of the country and the innovation domains. So we have domains, the name of domains, and the name of the countries that are participating. So यहाँ पे दो मिल चुके हैं हम लोगों को variables. Now, each country was required to send the team of top tier scientists into these domains, right? So इन सारे countries को क्या करना है, कुछ लोगों को भेजना है, कुछ scientist को representatives अपने country के representatives को भेजना है to attend that meeting, right? Every country has to send at least 10 delegates. Now the meaning of at least 10, minimum का 10 तो भेजना ही पड़ेगा, 10 and above that is allowed, but below 10 is not allowed. 10 से कम नहीं भेज सकते, 10 से ज्यादा 10 11 10 including 10 as well, 10 11 12 कुछ भी भेज सकते, but below 10 is not allowed. And no more than 5 delegates could be sent in by a single country to any of the domain. Okay, so किसी एक डोमेन में, एंड डोमेन क्या है, जैसे साइबरनेटिक्स है, तो साइबरनेटिक्स जो डोमेन है उसके अंदर यूएस से मैक्सिमम 5 ही डेलीगेट्स आ सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5. नॉट मोर देन 5 इज अलाउड टू एनी. सिमिलरली अगर यूके को साइबरनेटिक्स में भेजना है तो 5 ही समझता, सब 5 ही भेज सकते हैं. अगेन यूनाइटेड स्टेट्स को अगर ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी में भेजना है तो मैक्सिमम 5 ही भेज सकते हैं, नॉट मोर देन 5 डेलीगेट्स इन एनी ऑफ दीज डोमेन्स आर अलाउड. ओके, सो दिस वाज द सेट. राइट नाउ एक बार जल्दी से सारे स्टेटमेंट समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेट. First statement says the total number of delegates from Japan, Italy, and UK were different. Okay, so Japan, Italy, and UK के सारे क्या है, different है, and they formed an arithmetic progression. अच्छा, यहाँ पे this different word is very important क्योंकि arithmetic progression to 2 to 2 is also arithmetic progression. In that case, Japan, Italy, and UK can have the same number of delegates, right? But since different word is used, so that arithmetic progression will be either increasing or decreasing AP. Increasing AP हो सकता है या तो decreasing AP होगा. That means what, all three will have different number of members. ठीक है, I think first statement is clear. Second statement एक बार जल्दी से समझते हैं. In all domains except bioware safety, सारे डोमेन में except bioware, US has more delegates than any other country. US के पास ज्यादा delegates है as compared to any other country. ठीक है, अच्छा, that statement is very again very important, as well as this is a बेस्ट क्लू यू कैन हैव. देखो यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज कितने हैं, 1 2 3 4 5 कंट्रीज है. लेट्स से कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4 एंड कंट्री 5. ठीक है, एंड नॉट मोर देन 5 डेलीगेट्स कुड बी सेंट टू अ सिंगल कंट्री. तो मैक्सिमम 5 ही भेज सकते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ही हो सकता है. ठीक है,
ओके अच्छा थोड़ी देर में इसको वापस से समझाऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो इन ऑल द डोमेन एक्सेप्ट बायोवेयर सेफ्टी यूएस हैड मोर डेलीगेट्स देन एनी अदर कंट्री। यूएस के पास सबसे ज्यादा डेलीगेट्स है बाकी एज कंपेयर टू, सो मैक्सिमम इन बायोवेयर व्हिच हैज यूएस, राइट। In bioware safety, however, US had fewer delegates than other। अच्छा देखो, बायोवेयर सेफ्टी को छोड़ दो तो बाकी सब में यूएस के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेलीगेट्स है और बायोवेयर सेफ्टी में मिनिमम नंबर ऑफ डेलीगेट्स है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इन ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी डोमेन इटली हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। while in cybernetics UK has the list। okay, so oceanic sustainability में इटली के पास लिस्ट है और साइबरनेटिक्स के अंदर यूके के पास लिस्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ बहुत कुछ करने के लिए है नहीं इसके अंदर। Statement number 4, Germany and Japan each sent exactly 11 delegates in total and were neither the highest nor the lowest in any other domain। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जर्मनी एंड जापान ने 11 भेजे हैं, ना ही और साथ में जर्मनी जापान से कभी कोई सा भी नंबर ऑफ मेंबर हाईएस्ट भी नहीं है और लोएस्ट में, मतलब सबसे ज्यादा भी नहीं है सबसे कम भी नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 5, जर्मनी सेंट द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स ओनली इन साइबर, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली टू cybernetics and oceanic sustainability। ओनली मतलब out of all five, all these one this is 1 2 3 and 4, out of all these 4 domains only these two, cybernetics and oceanic sustainability will have the same number of members, otherwise बाकी और किसी में नहीं हो सकता है, राइट। मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों में सेम है, बाकी सब में डिफरेंट होगा, राइट। नाउ जापान, सिक्स स्टेटमेंट, जापान सेंट द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स ओनली टू बायोवेयर सेफ्टी एंड रेडिएंट। सेम थिंग, जैसे जापान जर्मनी के लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, द सेम गोज फॉर, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी समझते हैं, आगे समझते हैं। यूके सेंट द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स टू ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी एंड रेडिएंट टेक्नोलॉजी। तो स्टेटमेंट नंबर 5 6 एंड सेम एक जैसे, समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। 8, Italy sent different number of delegates to bioware safety and cybernetics। Again, same kind of statement, ठीक है। Now 9, no delegate attended more than one domain। Okay, so कोई भी आदमी एक ही डोमेन में अब काम कर सकता है, एक से ज्यादा डोमेन में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। And no two country had the same number of delegates in a single domain। Okay, so yeah, that's very important again। किसी भी कंट्री का सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स नहीं है किसी भी डोमेन के अंदर, एंड दैट नाउ थिंक अबाउट दिस। तो अगर ऐसा है एंड वी नो दैट मैक्सिमम ऑफ फाइव एक कंट्री एक डोमेन में मैक्सिमम 5 ही डेलीगेट्स भेज सकता है, एंड नन ऑफ द कंट्री हैज इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन एनी ऑफ द डोमेन। दैट मींस व्हाट, अगर मैं कंट्री C1 C2 C3 C4 एंड C5 बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि इफ एंड ऑल दीज कंट्रीज, लेट्स से एक डोमेन 1 के अंदर अगर बात करते हैं तो डोमेन 1 के अंदर सारे कंट्रीज के नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने हैं, 5 है। दैट मींस व्हाट, फॉर एनी डोमेन कंट्रीज के पास सिर्फ 5 ही पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 एंड 5, यही 5 नंबर इन 5 कंट्रीज के साथ आने वाले हैं, नथिंग मोर देन दैट। I think this much is clear to everyone, right? Now एक बार जल्दी से questions and options देख लेते हैं, then we'll solve the question। Now which country had the highest number of delegates? Okay, straight forward question है, set अगर solve कर पाएंगे तो directly question solve हो जाएगा, बहुत कुछ करने का है नहीं। Which country sent the least number of delegates to the summit? Same straightforward question। Which country had the third highest number of सेट सॉल्व करने से हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स टू द रेडिएंट टेक्नोलॉजीज डोमेन, राइट। सेट सॉल्व करने से आराम से आंसर आ जाएगा। एंड फाइनली, इफ जर्मनी एंड जापान डिसाइडेड टू कोलैबोरेट एंड सेंड जॉइंट टीम टू द समिट। ओके, सो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, यू विल यूज दैट व्हाइल विल सॉल्व द क्वेश्चन। आगे बार पढ़ लेते हैं। एंड देयर टोटल काउंट इज बेस्ड अपॉन टेकिंग द लोअर नंबर ऑफ डेलीगेट्स between the two of each domain। okay, ठीक है। so कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है बट pretty much doable question, right? नाउ एक बार चलो जल्दी से अपना टेबल बना के एंड फिल करना शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ विल हैव टू मेक आवर टेबल। अब जल्दी से हम लोगों ने सारे कॉलम्स के अंदर सारे के सारे डोमेन्स का नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल साइबरनेटिक्स, बायोवेयर, ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी एंड रेडिएंट एंड द टोटल, राइट। Now if you'll see, which I'll explain it one more time, that no two country had the same number of delegates in any one domain, right? So we have countries like US, UK, Japan, Italy and Germany, right?
Now, cybernetics, if we'll talk about domain cybernetics, then I can say cybernetics के अंदर जितने भी countries हैं, US, UK, Japan, Italy and Germany, they will have different number of members and maximum number of delegates can only be 5. तो मैक्सिमम 5 हो सकता है. मैं तो सोच के देखो, अगर मैंने यूएस को 5 दे दिया तो यूके, जापान, इटली, जर्मनी इनको 5 नहीं दे सकता हूं. राइट, इन दैट केस इसको मेरे को 4 अपार्ट फ्रॉम 5 1 2 3 4 में से कोई सा भी वैल्यू देना पड़ेगा. सिमिलरली जापान को मैं अब अगर मान लो इसको 4 दे दिया तो इसको 5 एंड 4 हो गया, इसको मैं 3 2 एंड 1 में से कोई दे सकते हैं. सो ऑल विल हैव टू बी डिफरेंट एंड 5 ही है तो दे मस्ट बी फिल्ड यूनिकली. अगर ये चीज समझ गए हो देन क्वेश्चंस विल बी इजियर. राइट, अब अगर ये चीज समझ गए हो आप तो एक चीज समझो कि अगर मैंने यूके को 5 दे दी, यूएस को 5 दे दिया, यूके को 4 दे दिया, जापान को 3 दे दिया, इटली को 2 दे दिया, जर्मनी को 1 दे दिया. राइट, एंड दिस कैन बी सफर्ड, बट यही 5 नंबर इन 5 जगहों पे आने वाले हैं. यही 5 नंबर इन 5 सेल्स में आने वाले. दैट मीन्स व्हाट कैन आई से, द टोटल नंबर ऑफ delegates in each of these domains will maximum or not exactly will be 15. तो ये भी 15 होगा, this will be 15, this is 15, this is 15 and the total number of members will be 60. I think this is pretty much clear to everyone. ये चीज सबको समझ में आ गया. This is how you need to think for a set. This is clear to everyone, right? Now अब जल्दी से अब फर्स्ट स्टेटमेंट से अपना काम शुरू करते हैं. नाउ द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन जापान, इटली एंड यूके वर डिफरेंट एंड फॉर्म एन एपी. ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो जापान, इटली एंड जर्मनी दे फॉर्म एन एपी. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना कि इनके साथ कोई सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है. सो ये जो एपी का जो सीक्वेंस है वो जापान, इटली एंड जर्मनी का ही नहीं हो सकता है, वो इटली, जापान एंड जर्मनी भी हो सकता है. सो दे आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिया हुआ है. कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड पे आएगा, इधर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हम लोगों को नहीं पता है. अगर ऐसा होता तो वो मेंशन किया हुआ होता, लेकिन अभी नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोगों को ये बात नहीं पता है कि इन विच सीक्वेंस दे आर इन. राइट, so first is taken care of. Second देखते हैं, in all the domains except bioware safety, US had more delegates than any other country. Now we know that maximum 5 ही सकते हैं, minimum का 1 होना ही है. तो मैं बोल सकता हूँ कि US will have 5 delegates in all the domains except bioware safety. So US, this will be 5, this will be 5, this will be 5. आगे पढ़ते हैं. In BioWare safety, however, US has the fewer delegates than all other country. Okay, मतलब BioWare safety के अंदर US के पास सबसे कम number of members हैं, which is 1. तो यहाँ पे तो 1 होगा. So the total number of members or total number of delegates from US will be 5 plus 5 plus 5 plus 1. So 15 plus 1 plus 16. So there will be 16 delegates from US. Second statement is also taken care of. Third, in oceanic sustainability domain, Italy has the least number of delegates and least number is 1. So Italy has ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी में इटली के पास कितने होंगे, 1 होंगे. ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी इटली, दिस विल बी 1. यहाँ पे हो गया. राइट, ये भी हो गया. While in cybernetics, UK has the list. Cybernetics में UK के पास list है. Cybernetics UK, this will be list. So this will be 1. So third is also done. Fourth देखते हैं, Germany and Japan each sent exactly 11 delegates. Okay, ठीक है, Germany and Japan. So this is Japan. So यहाँ पे 11 दे देते हैं. This is 11 and Germany, this will also be 11. And the total number of delegates that we know is 60. ठीक है. In Germany and Japan sent exactly 11 delegates in total and were neither the highest nor the lowest in any domain. That means what? Germany and Japan से जितने भी delegates हैं वो किसी भी domain में सबसे कम या सबसे ज्यादा नहीं है. That means what? For Italy and Japan अगर आप देखोगे, Italy and Japan में इस पूरे रो में 1 and 5 नहीं आ सकता है. अगर 1 हो गया तो वो minimum number of delegates हो जाएंगे. 5 अगर दोगे तो maximum number of. So इस पूरे रो में I can say only 2, 3 and 4 ही आ सकता है. सिमिलरली जर्मनी के साथ भी यही होने वाला है, 2, 3 and 4. आई थिंक 1 and 5 क्यों नहीं होगा, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राइट, स्टेटमेंट नंबर 4 इसको ध्यान में रखेंगे.
एंड आगे बढ़ते हैं. जर्मनी सेंट इक्वल नंबर सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स ओनली टू साइबरनेटिक्स एंड ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी. ओनली, अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, ओनली मीन्स फॉर जर्मनी साइबरनेटिक्स एंड ओशियन सस्टेनेबिलिटी विल हैव द इक्वल नंबर ऑफ, अदरवाइज बाकी के जो दो दो डोमेन बच गए विल हैव डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी हैव different number of delegates. एक बार समझाता हूँ, देखो. जर्मनी सेंट द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स ओनली इन साइबरनेटिक्स एंड ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी. जर्मनी में आते हैं, सो इट हैज साइबरनेटिक्स में अगर x भेजा है तो नाउ आई कैन से ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी में भी x ही होगा. बच्चा अब ध्यान से, सो अगर मैं साइबरनेटिक्स को x दिया है तो ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी भी x हो गया. नाउ तो अब x इस पूरे रो में x कहीं नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी x, दिस कैन नॉट बी x. एंड एट द सेम टाइम यहां बायोवेयर में जो नंबर आया है सेम नंबर रेडिएंट टेक्नोलॉजीज में नहीं आ सकता है. सो दैट इज व्हाई दिस ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट. Guys, while solving LR, you need to be very careful on these words like only, right? In the same order, in any order. You need to take care of commas and full stops, right? So that's very important. Otherwise, the meaning of the statement will change. I think this is clear to everyone. Now, next statement, fifth is done. Sixth, Japan sent the same number of delegates only to BioWare Safety and Radiant. Japan BioWare में अगर मैं Y ले लेता हूँ तो Radiant Technologies will also be Y. Okay, so BioWare Safety, BioWare and Radiant. So BioWare को Y दे दिया तो Radiant को भी Y देंगे. So this is for Japan. Now, UK sent the same number of delegates to Oceanic Sustainability and Radiant Technology. Oceanic and Radiant किसके लिए? UK के लिए. So if this is Z, so this will also be Z. Right, so the sixth and seventh is also done. Eighth statement, Italy sent a different number of delegates to BioWare Safety and Cybernetics. Okay, so Italy के अंदर आते हैं. So this is Italy के लिए Cybernetics and BioWare Safety, they have different. तो नाम दे देते, let's variable दे देते. इसको A दे दिया and B दे दिया, and A is not equals to B. I'll say A is not equals to B. ठीक है. Italy 8th statement is also done. Now look at the 9th statement. No delegates attend more than one domain, and I think हम लोगों ने 9th statement को already use कर लिया है, that no delegates attend more than one domain and no two country have the same number of delegates. This is already explained. ठीक है. I think यहाँ तक everyone is clear. ठीक है. Now आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा comprehension. Now since we know there are in total of 60 delegates, यूएस के पास 16 है, जापान के पास 11 है एंड जर्मनी के पास 11 है. दैट सम्स अप टू 16 प्लस 11 will be equals to how much? This is 16, 38. So this will be 38. So the remaining will be 22. Now in that case I can say so एक second, I made a mistake. Okay, so this is Japan, Italy and UK. So this is not Germany, this is UK. Now I can say, so since there are remaining of 20 that's 22 delegates. So now I can say UK plus Italy. UK plus Italy will have UK plus Italy will have 22 members. So these two is equals to 22, and both of them will have greater than 10 number of members, because it says in the set it says they send at least 10 delegates. तो मैं बोल सकता हूँ कि either they will have 11, but which is not possible because यहाँ पे लिखा हुआ Italy and UK have to have different number of, so 11 not possible. So I'll say this is 10 and this is 12. 10 and 12 हाँ चलेगा. उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ, उसको 13 दे सकता हूँ, या फिर 13 and 9. This is not possible because the number of delegates will be less than. So there is only two possibility for UK and Italy. So Japan has already 11 members. Italy will have 10 or 12, or UK will have 12 or 10, and which makes it a AP. So 10, 11 and 12 AP ही तो बन रहा है. किस सीक्वेंस में होगा अभी हम लोगों को नहीं पता. So I'll write it here. Okay, so Japan, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो now I can put that this UK will have either 12 delegates or 10 delegates, and Italy will have either 10 delegates or 12 delegates. यूनिकली नहीं बता सकते हैं अभी, ठीक है. उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या करना है. चलो नाउ इसको हटा दे दो. Now
अच्छा, एक चीज और, जो ये 2, 3 एंड 4 वाले को यूज कर लेते हैं. नाउ वी नो दैट फॉर जापान एंड इटली ओनली इन दीज सेल्स यू कैन ओनली यूज 2, 3 एंड 4, और 2, 3, 4 को ऐड करके हम लोगों को 11 लेके आना है. सो वी हैव 1, 2, 3, 4 4 सेल्स, 1, 2, 3, 4 4 सेल्स, और इनको ऐड करने के बाद हमको चाहिए 11. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 11. सो हाउ वी कैन डू दैट. एंड साथ में एक कंडीशन ये भी है कि एक नंबर रिपीट भी होना चाहिए. सो लेट्स ट्राई टू रिपीट दैट नंबर. तो सबसे पहला नंबर 2 है, तो 2 को लिखते हैं. तो दिस इज 2 प्लस 2 4 4 3 एंड 4. सो दिस विल बी 11. 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7 7 एंड 4 11. हाँ, पॉसिबल है. अगला देखते हैं. नेक्स्ट इज, अगर हम लोग 3 को रिपीट करा तो 3 प्लस 3 6 6 एंड 11 आता है कि नहीं. 6 प्लस, अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3. ओके, सो यहाँ पे 3 नंबर सेम हो गए. दिस इज नॉट पॉसिबल. 4 को रिपीट करा के देखते हैं. 4 प्लस 4 8 8 प्लस 2 10 प्लस 1, बट 1 तो आ ही नहीं सकता. सो दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी. नाउ सिंस वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पॉसिबिलिटी, जो कि यही वाला सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है. नाउ आई कैन से कि जो जापान और जर्मनी के अंदर जो x एंड y का वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकता है, बिकॉज नो अदर पॉसिबिलिटीज आर देयर. राइट. सो हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार यहां से हटा देता हूं. सो y विल बी 2 एंड दिस विल आल्सो बी 2. सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2, एंड सिमिलरली जर्मनी में भी 2 2 ही होगा. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 2. So this will be 2 for sure and this will be 2. I think this is clear to everyone. Now apart from that, अब हम लोगों को कुछ numbers भरने हैं. जैसे 3 and 4 अब fill करना है. So now I can say, अभी हम लोगों को नहीं पता कि this will be either 3 or 4 और this will be 4 or 3, है ना. एंड सिमिलरली यहाँ पे 11 लेके आना है. तो जर्मनी के पास भी देखो 2 प्लस 2 4 हो गए. सो दिस विल बी इधर 3 और 4 एंड दिस विल बी इधर 4 और 3. आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है. नाउ वी हैव द पॉसिबिलिटीज ओनली. नाउ लेट्स चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज वन बाय वन. And for possibilities, I'm using the different color, black color. Okay. Let's assume that UK has 10 members in his team. UK has 10 members in his team. Then in that case, then Italy will have 12 members in its team. ठीक है, चलो देखते हैं. So अगर हम लोगों ने UK को 10 लिया है तो Italy will have 12. Now एक बार जल्दी से values put करके देखते हैं. Now Z can be any number. Look at this. अब हम लोगों को 10 लेके आना है. If you'll see, बच्चा अभी हम लोगों ने क्या पता, सेम कॉलम में एक नंबर एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑल द कंट्रीज इन अ पर्टिकुलर डोमेन शुड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ डेलीगेट्स. राइट. सो इफ यू सी ना, तो Z के लिए पॉसिबिलिटी देखना. फॉर श्योर बच्चा एक बार मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे इटली 1 हो चुका है तो Z कैन नॉट बी 1. जर्मनी 2 हो चुका है, Z कैन नॉट बी 2. एंड सिमिलरली US 5 हो चुका है तो Z कैन नॉट बी 5. So UK can only be 4 or 3. ठीक है, सॉरी, Z can only be 4 or 3. So let's say कि Z को हम लोग यहाँ पे 3 दे दिए. If this is 3, this will also be 3. 3 plus 3 6 हो गया. 6 plus 1 7 हो गया. 7 अगर हो गया, so in that case हम लोगों को यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, which is not possible. क्यों नहीं possible है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है UK sent the same number of delegates to these two, है ना. ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी एंड रेडियंट टेक्नोलॉजी में ही इसके 2 हैं. सो Z एंड Z. राइट. सो दिस कैन नॉट बी 3. राइट. सो 3 अगर दे दिया तो सिर्फ क्या हो जाएंगे, तीनों में बराबर हो जाएंगे, विच इज नॉट द केस. राइट. सो यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म. राइट. दिस पॉसिबिलिटी इज गॉन. सो Z कैन नॉट बी 3. अगर Z 3 नहीं है, so we have to put Z is equals to 4. This is 4, so this will also be 4. This is 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, and this will be 10. 1, but we already have 1 here. अगर एक 1 हो गया यहाँ पे तो 1, this cannot be repeated in the same column, और same column पे repeat नहीं होगा तो हम लोगों को यहाँ पे ये possibility भी खत्म हो गया. And that is what we can say, that 10 is not possible. Number of delegates for UK is 10 is not possible. Right. In that case 10 को यहाँ से हटाएंगे. This is how you need to check the possibilities. Right. So यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं. So this cannot be 10. So this will be 12 for sure. और अगर मेरा UK 12 है तो मेरा Italy will be 10. Right. So this will be 12. This is 12 and this is 10. Now this is
uniquely we have determined the number of members in the groups. I think this is clear, right? Now, and again we need to check, we need to start checking the possibilities, guys. Again we need to have the sum as 12 for UK. फिर से अगर हम लोग z के लिए पॉसिबिलिटी चेक करते हैं तो आई कैन से 1 2 एंड 5 कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी, ओनली 3 एंड 4. चलो अब हम लोग यहाँ पे 3 रख देते हैं. इफ दिस इज 3 सो दिस विल आल्सो बी 3. 3 प्लस 3 कितना, 6. 6 प्लस 1 7. 7 अगर हो गया सो दिस हैज टू बी 5. ये हो जाएगा मेरा 5. नाउ इफ इट इज 5 गाइस एंड सेम कॉलम में सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता है. सो इफ दिस इज 3 सो दिस विल आल्सो बी 3. Sorry, this will be 4. I'm so sorry. So this will be 4. So I'll put 4 here. So यहाँ पे 4 हो गया. So oceanic sustainability देखो complete हो गया. So we put 1 2 3 4 and 5 put कर दिया. Similarly अगर Z यहाँ पे radiant technologies में देखो तो यहाँ पे 3 हो गया. So यहाँ पे 3 नहीं हो सकता तो this will be 4. यहाँ पे 4 हो गया, है ना. एंड जर्मनी के पास देखो यहाँ पे Germany can only have, देखो Germany sent the equal number of delegates only to cybernetics end. So if this is 2, this is 2, right? And अगर ये 4 है, this cannot be 4, so this has to be 3, right? So this is 2 plus 3, 5 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 4, 11. I think this is much is clear to everyone, right? Now एक बार जल्दी से fill कर लेते हैं जो बच गया है. So we are done. अगर मैं radiant technologies में देखूँ तो हम लोगों का 5 हो गया, 3 हो गया, 2 भी हो गया एंड 4 हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1. सो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, राइट. सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया. नाउ ओशियनिक सस्टेनेबिलिटी इज ऑलरेडी डन. नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 हो गया, दिस इज 1 2 3 इज ऑलरेडी डन. सो दिस विल बी 4 हियर, यहाँ पे 4 हो जाएगा. एंड इफ दिस इज 4, अगर ये 4 है अच्छा तो इस अच्छा एक चीज और, आई एम सो सॉरी टू आई हैवंट एक्सप्लेन्ड दिस. जापान में देखो, जापान के अंदर भी क्या है, जापान सेंड द डेलीगेट्स ओनली टू बायोस्फीयर, सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स. तो जापान के अंदर इफ दिस इज 2 सो दिस इज 2 एंड इफ दिस इज 4 दिस हैज टू बी 3. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना. एंड इफ दिस इज 3 दिस हैज टू 4 एंड विच इज नॉट गोइंग विद आवर कंडीशन. That is, Italy will have different number of team members in cybernetics and biowares, right? And that is where my assumption that Z is equals to 3 is wrong, right? So the entire possibility, this is how you need to work and eliminate all the possibilities, right? Now I think this is clear. So only possibility left for Z, so I need to erase everything, guys. So ये सारा possibility खत्म हो जाएगा, हटा दो सबको. Now only possibility left is what? Z equals to 4. Z equals to 4. इसको भी हटा देते हैं, सारे को हटा दो. Now again I'll use the different color because now we got everything. Now so this Z is equals to 4, so this will be 4, so this will also be, so this is 4 4 8 8 plus 1 is 9, so this has to be 3. And if this is 3 so this has to be 4. ये मेरा 4 हो जाएगा. Now this will be 4. This is 4, right? Now if this is 4 so this has to be 3. ये मेरा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3. I think this is clear. And now since this is 2 and 2, again we can say अच्छा यहाँ पे if you can say this, if this is 4 so in जापान के अंदर oceanic sustainability के अंदर 3 हो जाएगा. So this has to be 3, this will be 3, and if this is 3 this will be 4. So this will be 4 and this is 3. So this is 4 plus 3 7 7 and 2 7 2 9 plus 2 11 5. This is 16. I think this is pretty much clear to everyone now. So this is, if you'll see, 1 is done, 2 is done, 3 is missing, so A will be equals to 3. So 1 2 3 4 and 5. Similarly 1 2 3 5 is missing, so B का value हो जाएगा 5 and rest is done. So 5 4 3 2 1 and 5 4 3, so this will be 1. Now this is how you need to this is how we have completed the entire table. This is a lovely set with a sort of numbers ka application as well as a matrix arrangement. Let's quickly look at the questions. First question, if you'll see the first question reads that which country had the highest number of delegates in the bioware safety domain? Bioware safety domain में highest किसका है?
Biowear safety में highest has Italy has the highest. So Italy will be the correct answer. Answer D is the correct, right? Second, which country sent the least total number of delegates to the summit? Which country sent the least total number of delegates? Okay, so जिसके पास 10 है, 10 is again Italy, so the answer is Italy. Italy. Second answer be Italy. Third, which country has the third highest number of delegates in gradient technology? Third highest मतलब 5, 4 and 3. किसके पास 3 है? 3 is with German. Gradient technology में 3 किसके पास है? Germany के पास. So the Germany will be the correct answer. And last, look at the question. Now, if Germany and Japan decided to collaborate and send a joint team to the summit, and their total count is based upon taking the lower number of delegates between the two. Okay, तो मतलब दोनों को कंपेयर करो, किसको? जर्मनी को एंड जापान को, और जिसके पास मान लो जर्मनी के पास 5 मेंबर्स है, इटली के पास 3 मेंबर्स है, तो इन दोनों के बदले ये 3 जाएंगे बिकॉज 3 हैज लोअर नंबर ऑफ डेलीगेट्स बिटवीन द टू. How many the total number of delegates will represent the joint team? The total number of delegates. अगर ऐसा होता है तो total number of delegates कितने? चलो एक बार जल्दी से जर्मनी और जापान को कंपेयर करते हैं. जापान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जर्मनी 2 है. ओके, मतलब साइबरनेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 जाएंगे क्योंकि लोअर 2 है. सिमिलरली यहाँ पे जापान 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से भी 2 ही जाएंगे. फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से भी 2 ही जाएंगे. एंड यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से भी 2 ही जाएंगे. सो इफ यू सी, जापान के पास 11 थे, जर्मनी के पास 11. सो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 11 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 22. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोल रहा हूं क्या कि जहां 22 लोगों को जाना था वहां पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 सिर्फ 8 लोगों को भेज रहे हो आप. राइट, दैट मीन्स व्हाट? 14 डेलीगेट्स, नंबर ऑफ डेलीगेट, टोटल डेलीगेट्स में 14 का रिडक्शन आएगा. सो माय आंसर विल बी कितना? 14 लोगों को नहीं जाने दिया आपने, तो टोटल कितने हो गए? 16 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 46. सो द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने? 46 इज द करेक्ट आंसर. I think this set is clear to everyone. A lovely set to work with. जब भी गाइस मैं ये सेट देता हूँ आप लोगों को, प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन सबसे पहले. अदरवाइज सिर्फ सॉल्यूशन देखने से आपका कोई भी हेल्प नहीं होने वाला है इन योर प्रिपरेशन. सो सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन. Hope guys you have enjoyed the session. Thank you so much for giving your time. If you have liked the session, please share with your friends and give a thumbs up. And for daily contents, please subscribe to the channel. Thank you.